Okay, in the second part, let us see actuators. एक्चुएटर्स जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये सेंसर के जस्ट अपोजिट काम करते हैं. एक्चुएटर्स आर नेचुरल कॉम्प्लीमेंट टू सेंसर्स. Sensors are designed to sense and measure practically any measurable variable in the physical world. सेंसर से हम लोग कोई डाटा गेन करके फाइनली कंट्रोलर को देते हैं. They convert the measurements, typically analog values, into electrical signal or digital representation that can be consumed by an intelligent agent. ये सेंसर का काम हो गया. बट और फाइनली जो कंट्रोलर के पास सेंसर से सिग्नल गया and finally due to some algorithm the controller is giving a decision signal, उसको finally action में convert करने के लिए we require an actuator. Actuator therefore on the other hand receive some type of a control signal, commonly an electrical signal or a digital command that trigger a physical effect, usually some type of motion, force or so on. So in a single line we can say that sensor provide the information and actuator provide the action. Now actuators also vary greatly in function, size, design and so on. Different variety के, different function के, different sizes के, different designs के, depending on the working principle, there are variety of actuators. Some common way that they can be classified include the following. जो जिस बेसिस पे हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, पहला बेसिस ये हो जाता है टाइप ऑफ मोशन. If the motion is linear तो वो linear actuators है, rotatory actuators है, and कई actuators तो 2 या 3 या 4 axis में भी move करते हैं. ठीक है, तो depending upon the motion we can classify the actuators. Depending upon power we can define an actuator. It can be a high power actuator or a low power actuator or a micro power actuator. Similarly, if the output of the actuator is having two stable state, then it is a binary actuator. If it is having continuous output, then we say it is a continuous actuator. If it is having more than two stable state, it can be ternary or tertiary actuators. So depending upon the stable state, output state, we can classify the actuators. Similarly, for the area of application, we can classify the actuators. And lastly but not least, the type of energy, which type of energy it generates, or on that basis we can also classify the actuators. On that basis, mainly we can give this following type of actuators. First are mechanical actuators. Examples are lever, screw jack, hand crank. Second is electrical actuators, that are thyristor, bipolar transistor, diode. Electromechanical actuators, that is AC motors, DC motors, step motors. Electromagnetic actuators, that is electromagnets, linear solenoids, hydraulic and pneumatic actuators. Examples are hydraulic cylinder, pneumatic cylinder, piston, pressure control valves, air motors, and smart material actuators are shape memory alloy, that is SMA, ion exchange fluids, magnetorestrictive materials, bimetallic strips, piezoelectric biomobs. These are some of the smart material actuators. And nowadays we are very much interested in micro and nano actuators. Examples are electrostatic motors, micro valves, COM drives. So these are the some of the energy type actuators classification. Now nowadays we have especially for IoT application, a very special technology has been developed for designing sensor and actuators that are known as micro electromechanical systems. That in short it is known as MEMS. Okay, because in the IoT the major part is that
how we are deploying our sensor and actuator, and how this sensor and actuator are finally packaged, that is very much important, because we required our actuators and sensor in a very small size, in a nano levels or in a micron levels. For that, specially this technology has been developed, micro electrical mechanical system MEMS, sometimes simply referred to as micro machines, can integrate and combine the electrical as well as the mechanical elements such as sensor and actuators on a very small scale, in a millimeter or micron level. One of the key to this technology is the microfabrication technique, that is similar to what is used for a microelectronic integrated circuit. It is तो microfabrication technique जहाँ यहाँ पर कहा, यहाँ पर बेसिकली इसको सिमिलरली जैसे हम लोग VLSI में करते हैं, नैनो लेवल्स पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं, उसी तरह से मैकेनिकल एक्चुएटर्स भी हम लोग नैनो लेवल्स पे डिज़ाइन कर सकते हैं. दिस अप्रोच अलाउ मास प्रोडक्शन एट वेरी लो कॉस्ट. नाउ जैसे कि हम लोगों ने सेंसर्स में को सिलेक्ट करने का एक कुछ क्राइटेरिया, कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए थे, वैसे ही एक्चुएटर्स को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास सर्टेन क्राइटेरिया का सर्टेन कुछ पैरामीटर्स होते हैं. उसके बेसिस पे हम लोग एक्चुएटर्स सिलेक्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए. ओके, तो what can be the basis for selecting the actuators are, first point that is continuous power output. ओके, हम कोई भी एक्चुएटर में ये चाहेंगे, फॉर एग्जांपल इफ पर्टिकुलर एक्चुएटर इज डिलीवरिंग 1 माइक्रोवाट, तो 1 माइक्रोवाट वो थ्रू आउट इस लाइफ टाइम वो देता रहे कंटिन्यूसली, और उसके बाद इस पावर आउटपुट को देते वक्त वो जो उस एक्चुएटर की टेम्परेचर लिमिट है उसको वो क्रॉस ना करे. ठीक है, फॉर एग्जांपल दैट पर्टिकुलर एक्चुएटर इज फॉर वर्किंग इन द टेम्परेचर एनवायरनमेंट ऑफ 30 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा एक्चुएटर की वैल्यू राइज ना कर जाए ड्यू टू द कंटिन्यूस पावर आउटपुट. तो दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर. सेकंड इज रेंज ऑफ मोशन. ठीक है, हर एक एक्चुएटर की अपनी एक रेंज ऑफ मोशन है कि कितनी लिमिट तक वो मोशन करेगा. रेजोल्यूशंस, द मिनिमम इंक्रीमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क अटेनेबल. ठीक है, कितनी मिनिमम वैल्यू तक मेरा जो भी एक्चुएटर का आउटपुट है वो दे सकता है, दैट इज गिवन बाय रेजोल्यूशन. एंड एक्यूरेसी, दैट इज सिंपली द लिनियरिटी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट. पीक फोर्स एंड टॉर्क, हर एक एक्चुएटर का एक पीक वैल्यू होती है. ठीक है, चाहे वो फोर्स की हो चाहे वो टॉर्क की हो, तो उस वो क्या होगी, दैट्स अगेन एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर. हीट डिसिपेशन, मैक्सिमम वाटेज ऑफ हीट डिसिपेशन इन अ कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन. किसी भी कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन में फाइनल मैक्सिमम हीट कहाँ तक, उसका क्या लेवल रहेगा एक्चुएटर का, दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर. स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज सिंपली गिवन बिटवीन दिस इज फोर्स और टॉर्क कर्व, और यू कैन से इट इज अ फोर्स वर्सेस स्पीड और टॉर्क वर्सेस स्पीड रिलेशनशिप. नो लोड स्पीड, नो लोड स्पीड इज सिंपली is the speed when you are not applying any load to the actuator. Okay, frequency response, it is simply the range of frequency over which the output follows the input faithfully, and this is normally applicable for the linear actuators. And finally the power requirement, the most important, कि आप जो एक्चुएटर यूज कर रहे हैं वो कैसे एनवायरनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं. फॉर एसी एप्लीकेशन, वेदर इट इज फॉर डीसी एप्लीकेशन, नंबर ऑफ फेसेस, 2 फेस चाहिए, 3 फेस चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. And finally, what will be the final voltage level for running this actuator? What will be the current capacity for this actuator? So these are all the power requirements, criteria for designing a particular actuator. Now, finally, we come to the main part of our theme, that is Internet of Things. Internet of Things में जो हमारे जो actuators और sensors जहाँ फाइनली इम्प्लीमेंट होते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में वायरलेस सेंसर नोड कहते हैं, और यू कैन से इन अ सिंपल थिंग दैट इट इज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट. इट्स क्वाइट सिंपल, इट्स अ मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ IoT. दे आर
what transform everyday object into a network of intelligent objects that are able to learn from and interact with their environment in a meaningful way. स्मार्ट ऑब्जेक्ट वो है ऑब्जेक्ट है जो अपने जैसे और से स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सके, उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सके. ठीक है. The real power of smart object in IoT comes from the being networked together rather than being isolated as a standalone object. यहाँ इस चीज को मैं थोड़ा एक लाइव एग्जांपल से इसको समझाना चाहूँगा. If for example, if I consider a standalone एक सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, उसको मैंने सॉइल में इंप्लीमेंट कर रखा है. ठीक है. वो आपको कुछ डाटा दे रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी बात है. बट इज इट, ये कोई रेवोल्यूशन नहीं है, सेंसर है, डाटा दे रहा है. इफ अगर मैं उसी सेंसर, इफ दैट सेम सेंसर इज कनेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ एन इंटेलिजेंट नेटवर्क that is able to coordinate intelligently with the actuator to trigger the irrigation system as needed based on the sensor reading. मान लीजिए उस ह्यूमिडिटी सेंसर से मेरे पास रीडिंग आई कि भाई ह्यूमिडिटी लेवल कम है, पर्टिकुलर लैंड इज रिक्वायर्ड एंड वाटर, तो उसी हिसाब से वो इरिगेशन सिस्टम को ट्रिगर कर रहा है. देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी मच पावरफुल. नाउ योर सेंसर इज अ स्मार्ट सेंसर. Okay, now if you can further extend this. If you simply coordinate the sensor actuator set is intelligently interconnected with the other sensor and actuator set. ये तो आपने एक ह्यूमिडिटी सेंसर लिया, इसके अलावा pH सेंसर और भी सेंसर, और उसको आपस में परफेक्टली कोऑर्डिनेट किया. यू कैन फाइनली फाइंड द फर्टिलाइजेशन, पेस्ट कंट्रोल एंड सो ऑन. और भी बहुत सारी चीजें आप फार्मिंग में कंट्रोल कर सकते हैं. इवन दो यू कैन कैलकुलेट द क्रॉप यील्ड पोटेंशियल. फाइनली ये बता सकते हैं कि पर्टिकुलर ग्राउंड से कितना प्रोडक्शन होगा. सो दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट आई वांट टू से. इफ अ सेंसर इज वर्किंग अलोन एज अ स्टैंड अलोन डिवाइस, it's not a adventure. If you simply consider variety of sensors and do some smart application of that different variety of sensors, then with the help of the internet, then that is nothing but IoT, Internet of Things. Okay, this smart object, or in a more technical word, in this wireless sensor node, the minimum requirement of this device or this object should be, it should have a teeny low cost computer embedded into an object to make them smart, can be organized into a network. There should be a sensor that can measure a physical data, for example temperature, vibration or pollution, something like that. There should be some actuator capable of performing a task, for example changing the traffic light, rotating a mirror. And there should be a communication device to receive the instruction, send or route the data, self-organizing into the network. Even though मतलब आजकल इतने स्मार्ट नोड्स आ गए कि वो अपने आप को नेटवर्क में अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं कि उनको कहाँ होना चाहिए. तो दिस इज अगेन डन बाय द कम्युनिकेशन डिवाइस. एंड फाइनली यू रिक्वायर्ड अ मेमोरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द पावर सोर्स टू रन ऑल दिस पार्ट्स. इसको मैं अगर और एक डिटेल ब्लॉक डायग्राम से आपको क्लियर करता हूँ कि अगर जैसे सेंसर्स हैं, अब सेंसर कहना तो सफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेंसर्स आर हैविंग गिविंग द एनालॉग डाटा एंड आवर प्रोसेसर इज इन द डिजिटल प्रोसेसर. तो वी रिक्वायर्ड अ एडीसी देयर. तो सेंसर के साथ एक एडीसी यूनिट भी लग जाता है जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कर रहा होता है और उस डिजिटल डाटा पे प्रोसेसर काम कर रहा होता है. अगेन for doing parallel processing and multi-processing, you need a storage there. Okay, the processing unit comprises of processor plus storage. And for communication purpose, we require a transceiver. और उसके अंदर बहुत सारे पार्ट हो गए, modulator, demodulator. There should be a antenna there to receive the signal and to transmit the signals. So देखा जाए तो सबसे मेजर एनर्जी यही ट्रांसरिसीवर में खर्च होती है. ठीक है. इसके अलावा according to your application, you can also add location finding system, for example GPS मॉड्यूल आप यहाँ पर इनबिल्ड कर सकते हैं. ठीक है. You can inbuild the mobilizer
You can even inbuild the power generators in the case where the power is being used in the microwatt or nanowatt or picowatt level. अगर आप पावर जनरेटर फॉर एग्जांपल यू कैन इंट्रोड्यूस अ सोलर सेल ओवर देयर, वो पावर यूनिट को वापस रीबिल्ड करता रहेगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन यू कैन ऑल्सो ऐड दिस थ्री थिंग्स more into the sensor nodes. So finally, I just conclude that sensor node components consist of sensing unit, processing unit, transceiver unit, power unit, location finding system optional if you required for your application, power generator again it's an optional if you required for your application. Finally, the mobilizer again it's an optional part. Now, the most important part of this sensing and actuating, which I already explained to you the various examples. Other than that, there is a processing unit, which is also the most important part, and, which simply do the following functions: acquiring data, processing and analyzing the processing and analyzing sensing information received by the sensors, कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स टू एन एक्चुएटर्स, मतलब कि आपने सिग्नल प्रोसेस किया, फाइनली एक्चुएटर को कंट्रोल सिग्नल्स दिए. इवन कंट्रोलिंग द एक्चुएटर, इट इज आल्सो कंट्रोलिंग अ वैरायटी ऑफ फंक्शन ऑन द स्मार्ट ऑब्जेक्ट. उस स्मार्ट सेंसर नोड के ऊपर जो आपस की कंट्रोलिंग है वो भी प्रोसेसिंग यूनिट देखता है. ठीक है, इट्स जस्ट सिंपली इंक्लूड द कम्युनिकेशन एंड द पावर सिस्टम आल्सो. The most common is the microcontroller because of its small form factor, flexibility, programming simplicity, uniformity, low power consumption and low cost. Detail will be covered in the embedded system part, which is being delivered to you in the next few lectures on embedded system by engineer Anand Gupta ji. Now, the rest of the parts are sensor and actuator, which I already explained to you. A smart object is capable of interacting with the physical world through sensor and actuators. तो आपका जो नोड है वो जो इंटरेक्शन फिजिकल वर्ल्ड से कर रहा है वो आपके सेंसर और एक्चुएटर के थ्रू कर रहा है, और इनको फाइनली कम्युनिकेशन डिवाइस चाहिए फॉर डूइंग दिस. ठीक है, और ये कम्युनिकेशन डिवाइस फाइनली सेंडिंग द डाटा या कैलकुलेशन करने के बाद ये फाइनली they are using internet for communicating in between the sensor nodes. That's why it is known as Internet of Things. Communication device for smart object can be either wired or wireless. ठीक है, ये wired भी हो सकते हैं, wireless भी होते हैं, but when we are talking about Internet of Things, we are talking about wireless part. And finally, the power source. Smart objects have components that need to be powered. The most significant power consumption usually comes from the सबसे ज़्यादा पावर कंजम्पशन जो होता है आपके कम्युनिकेशन यूनिट में होता है, क्योंकि उसको वहाँ पर एंटीना भी ड्राइव करना होता है, सिग्नल भेजना होता है, सिग्नल रिसीव करना होता है, उसके अलावा मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, काफ़ी कुछ करना होता है. देयरफॉर द कम्युनिकेशन यूनिट कंज्यूम्स द मैक्सिमम पावर ऑन द सेंसर नोड. तो वो आप जितना अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं आपका सेंसर नोड उतना अच्छा होगा. तो जो फाइनल मतलब कि जो चैलेंज है एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने का, या यूं कह लीजिए वायरलेस सेंसर नोड बनाने का, जो ट्रेंड्स हैं, हमारा काम है वहाँ पर साइज को जितना डिक्रीज कर सकें. साइज इज डिक्रीजिंग, पावर कंजम्पशन इज डिक्रीजिंग. ठीक है, हम चाहेंगे कम से कम पावर में वो यूज़ हो, तो हमारा जो भी पावर सोर्स है वो बहुत देर तक फंक्शन करे. प्रोसेसिंग पावर इज इंक्रीजिंग. मेरा जो कंट्रोलर यूनिट है वो बहुत सारी प्रोसेसेस बहुत जल्दी कर पाए, तो यू नीड अ गुड प्रोसेसर ओवर देयर. कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज आर इम्प्रूविंग. you people are using different communication techniques for this purpose. Communication is being increasingly standardized. इनके पर्टिकुलर मतलब कि IoT के लिए प्रोटोकॉल्स डिफाइन हो गए, which has been already discussed by Parul ma'am. Okay, so they are already standardized इसको यूज करने के लिए. तो in this way the sensor and actuators are playing a very vital role in the IoT.
through this sensor nodes or through the smart objects. With this, I would like to take a halt, and I think you must have enjoyed this lecture. Thank you.